is Chandni Kohli from Tech Kaksha. In this video, we'll be talking about complexity analysis of quicksort algorithm. So without any further delay, let's directly jump to the video. So there are three cases of complexity analysis of quicksort algorithms. Case 1, when we have a best case running time, and it happens when the partitions are evenly distributed. Now there is a case 2, which is a worst case, when the list is sorted, but it can be either in ascending order or in the descending order. Case 3, which is an average case, when the partition is not evenly distributed. They are unbalanced. So let's talk about the first case, which is best case. So best case हम कह रहे हैं कि जब partition हमारे पास evenly distributed होगा. So let's, for example, I have this array and it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are 9 elements, which is odd. So अगर मैं इसको divide करूंगी, so if I have an odd number of elements, that means my pivot at the middle. For example, अगर मैं quicksort algorithm को run करती हूँ, so my pivot would be 55. So that means इससे पहले मेरे पास कौन कौन से elements आएंगे? That would be 33, 11, then 22, then 44. Okay. Then इसके right hand side पर मेरे पास elements आएंगे 99, 66, 77 and 88. So I have an odd number of elements. That means split जो मेरा होगा, that would be at the middle. And उसके left hand side में कितने elements हैं? That would be n minus 1 divided by 2. So I have n is 9 minus 1 divided by 2. That would be 8 divided by 2 and 4. So I have 4 elements on this side. Same, I have same these elements in the on the right hand side. तो अगर मेरे पास 9 है तो 9 इस साइड भी 4 elements है, इस साइड भी 4 elements है, and this is the case when I have a odd number of elements. But अगर मैं odd number की बात ना करूँ, if I have an even number of elements, जैसे मेरे पास यहाँ पे even number of elements है, so if I run the quicksort algorithm, so मेरे पास जो middle में आएगा that would be 33, ठीक है, and उसके right hand side left hand side पे होगा 22 and 11, and इसके left hand side right hand side पर होगा 44. So यहाँ पर मेरे पास elements जो हैं that would be, अगर मैं यहाँ पर n मानूं, so यहाँ पर n क्या है मेरे पास 4, ठीक है. So एक में मेरे पास होंगे 4 divided by 2, that means 2, and दूसरे साइड पे हो सकते हैं मेरे पास जो आएंगे elements, that would be n divided by 2 minus 1. So n divided by 2, n is 4, divided by 2 is 2, minus 1, that means 1 element. So in the even number of, when we have an even number of elements, so we have a split. One side we have n by 2 elements, and on the right side we have n divided by 2 minus 1 elements. ठीक है? I hope you got this idea. So हमारे पास ये हम further division करते जाएंगे. So let's see, अगर further division करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा? So if I have n elements and मैं हर बार divide by 2 कर रही हूँ, so मैंने इसको split किया तो n by 2 हो गया, ठीक है. इसको फिर से मैंने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड हो रहा है तो n by 4, एंड राइट हैंड साइड पे भी मैं n by 4. मैं ऑलवेज से कंसिडर कर रही हूँ कि मेरी कोई भी साइड हो तो मेरे पास एट मोस्ट n डिवाइड बाय 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है. अब मैं इस साइड को फिर से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास n डिवाइड बाय 4 and n divide by 4. So let's see. Again, I am dividing it again, and that will happen n by 8, and this will be n by 8. This will be n by 8. So this also n by 8 and this also n by 8. And ये हम कब तक divide करते जाएंगे जब तक मेरे पास जो size of the array है वो मेरे पास 1 नहीं आ जाता. This should be 1. This should be 1. This should be 1, this should be 1, this should be 1, this should be 1, ठीक है. So at each level we count the cost, ठीक है. So यहाँ पर मेरे पास n cost है, and this is also n. How? To n by 2 plus n by 2. So LCM would be 2, ठीक है. नीचे आएगा 2n. So divide, cancel किया 2 से 2. So my result is n. At this level also n by 4
n by 4, then n by 4, then n by 4. So this is 4n divided by 4. So it will be n again. So here also, अगर मैं पूरा प्लस करूंगी, that would cost me 8n divided by 8. n से 8 cancel. So at every level we have n cost. ठीक है? And how many levels we do have? So देख लेते हैं. So n यहाँ पर है, मैं उसके बाद divide by 2 किया, फिर उसके बाद मैं divide by 2 किया, फिर इसके बाद डिवाइड बाय 2 किया, ये मैं करती जा रही हूँ। और ये कब तक करना है? जब तक मेरे पास रिजल्ट जो है 1 नहीं आ जाता। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, n डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर k, बिकॉज मैं हर बार डिवाइड करती जा रही हूँ, तो देयर इज अ कोई पावर मेरी बढ़ती जा रही है। पहले 2 थी, फिर देन 4 हुई, देन 8 हुई, तो जो मेरी पावर है उसको मैं के अज्यूम कर रही हूँ। एंड रिजल्ट कितना आना चाहिए मेरे पास एट द एंड? मेरे पास सारे डिविजन करने के माई रिजल्ट शुड बी 1। तो अब इसको करूंगी, 2k मेरा इधर गया। नाउ आई विल टेक लॉग हियर, लॉग n, एंड जब मैं लॉग करूंगी तो k मेरा नीचे आएगा, एंड दैट वुड बी log 2। सो आई विल राइट log n डिवाइड बाय log 2 एंड ये एक फॉर्मूला होता है वेयर, जहां पर अगर आप लॉग के कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे, सो यहाँ पर मेरा ये बन जाएगा log 2 n इक्वल्स टू k। दैट मीन्स जो हाइट है मेरी ट्री की, दैट वुड बी log 2n। ठीक है? सो आई हैव अ हाइट ऑफ दिस इज log 2n, and at each level I have a cost of n, so my total cost would be big O of n log n. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel and press bell icon for more notifications. And Tech Akshay is also running 2 batches of Python and data structure. If any one of you are interested in these courses, you can contact us. Information is given in the description box. Thank you. Thanks for watching.